सो आज हम लोग करने जा रहे हैं सीटेट का पेपर 2। ये है साइंस 30 मार्क्स का, जिसपे साइंस का क्वेश्चन भी है और साइंस पेडागोगी भी है, और ये हुआ था 8 फरवरी को 2026। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विथ इट्स एक्शन इन कॉलम बी। सो यहाँ पे हम लोग को मैच द ऑर्गेनिज्म करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑर्गेनिजम्स का, ईस्ट, प्रोटोजोआन, बैक्टीरिया, वायरस। सो हियर द ऑप्शंस, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 2, ओके, जिसपे ईस्ट होगा बेकिंग ऑफ ब्रेड के लिए, और नंबर बी प्रोटोजोआ होगा कॉजिंग मलेरिया, बैक्टीरिया कॉजिंग कोलेरिया एंड वायरस कॉजिंग एड्स। सो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, which of the following parts of the solar cooker is responsible for the greenhouse effect? So black color coating inside the box, number 2 mirror, number 3 outer cover of the solar cooker, number 4 glass sheet. So इसका right answer होगा number 4, that is glass sheet. So moving to next question, read the excerpt given below and answer the question. French scientist Henri Becquerel was working on phosphorescent material which glow in the dark after exposure to light. He believed that sunlight was the reason that the crystal would burn its image on a photographic plate. On a stormy day in 1896, he decided to leave it for a few days and resume his experiment later. A few days later, he took his crystal out of a darkened drawer. He noticed that the image burned on the plate was fog, which meant that the crystal had still emitted ray despite the lack of sunlight. What does the above expert illustrate about science? So the options है इसका, science is procedural more than creative. Number 2, scientific discovery can be serendipitous. Number 3, science is a solitary pursuit. And number 4, scientific knowledge is tentative. So इसका correct answer होगा number 2, scientific discovery can be serendipitous. 64, आइडेंटिफाई द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन विथ वाटर। यहाँ पे दिया गया है नंबर ए रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, और बी रिएक्ट विथ स्टीम ओनली, सी डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सो ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 2। जैसे कि नंबर ए दैट इज पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, और आपका जो आयरन है रिएक्ट विथ स्टीम ओनली, एंड कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नाउ दूसरा क्वेश्चन है 65, द फ्री एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल एंड स्विच आर कनेक्टेड वन बाय वन टू वायर ए बी सी एंड डी, विच ऑफ दिस वायर वुड प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे दिया गया है वायर ए बी सी डी, लेंथ भी दिया हुआ है 10 10 12 5, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। सो ए का है 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -8, दूसरा है 8 इंटू 10 टू द पावर -8, और सी का है 6 इंटू 10 टू द पावर -8, एंड डी का है 10 टू द पावर 10 -8। सो द ऑप्शंस आर 1 2 3 4। सो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ओके, दैट इज जिसका लेंथ है 12 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 6 इंटू 10 टू द पावर -8। 66, which of the following is not done during the process of treatment of waste water? So ऑप्शन दिया गया है sand, grit, pebbles are made to settle by decreasing the speed of wastewater. Sludge is scraped out and skimmer remove the grease. Wastewater enter a grit and sand removal tank. Number 4, inorganic impurities such as nitrate and phosphate are removed by chlorination. So the correct answer is number 4, inorganic impurities such as nitrate and phosphate are removed by chlorination. 67,
Sana and Priya measured the body temperature using thermometer. Sana recorded her body temperature to be 98.6 degree Fahrenheit, while Priya recorded her to be 38.4 degree Celsius. Which of the following statement is true? अगर आप यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है इसको आपको कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट में, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 98.6 फ़ारेनहाइट जो ऊपर दिया हुआ है इससे आपका ग्रेटर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जब आप कन्वर्ट करोगे 38.4 डिग्री सेल्सियस को, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 3, बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्रिया इज मोर देन दैट ऑफ साना। 68. Which of the following attribute would you associate with scientific temper? Now, option A, perseverance in carrying out scientific investigation. Number B, creativity in coming up with big problem to be investigated and breaking them down into smaller solvable parts. Number C, skepticism towards non-scientific belief. नंबर डी, कमिटमेंट टूवर्ड कल्चरल परसिवरेंस। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4। सो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, जिसपे ए बी सी जो करेक्ट है, ठीक है। जो नंबर डी है कमिटमेंट टूवर्ड कल्चरल परसिवरेंस, ये नहीं होगा, ठीक है। 69, मैच द एनिमल विद द मोड ऑफ फीडिंग। सो यहाँ पे एनिमल को उसका मोड ऑफ फीडिंग के साथ मैच करना है। सो हाउस फ्लाई, ह्यूमिंग बर्ड, कॉकरोच, इन्फेंट दिया हुआ है, और कॉलम बी में बाइटिंग एंड च्यूइंग, सॉकिंग, स्पॉन्जिंग एंड सॉकलिंग। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 2 3 4 इज गिवन दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज आपका नंबर 3, जैसे कि हाउस फ्लाई, ओके, हाउस फ्लाई का होगा आपका स्पॉन्जिंग, और ह्यूमिंग बर्ड का होगा आपका सॉकिंग, कॉकरोच का होगा आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग, और इन्फेंट्स का होगा आपका सॉकलिंग। 70. A student has an alternative conception that air contract on heating. Which of the following strategies would you adopt to challenge this alternative conception? So ask the student to attach a deflated balloon to the mouth of a bottle containing air and place the bottle in water bath containing boiling water and note down the observation. So option 2, explain the difference between conduction and convection to illustrate that air is a poor conductor of heat. Number 3, ask a student to do an activity which involves filling a plastic bottle to half of its capacity with very hot water, capping tightly and keeping it aside for few minutes. Ask a student to note down the observation. Number 4, ask a student to refer to the textbook, for example, from daily life where air expand on heating. So इसका सही आंसर होगा नंबर 1, ask the student to attach a deflated balloon to the mouth of a bottle containing air and place the bottle in water bath containing boiling water and note down the observation. 71, read the following statement and choose the correct option. यहाँ पे assertion और reasoning का क्वेश्चन है। assertion क्या है, while preparing a dough for bread, baking powder is added along with yeast to facilitate fermentation. रीजनिंग क्या है, बेकिंग पाउडर एक्ट एज फूड फॉर yeast. सो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 इज दिया हुआ है। सो इसका सही आंसर होगा आपका नंबर 1, जो कि है बोथ ए एंड आर फॉल्स। 72, read the following excerpt. There was a belief that all living beings on earth were created by God. However, Darwin and Wallace came up with the idea that life forms evolve on the earth from previously existing form of life. What does the above excerpt illustrate about the nature of science? Option 1, science is interdisciplinary. Option 2, science is value neutral. Number 3, science progresses by following the scientific method. Number 4, science is tentative. So इसका सही आंसर होगा नंबर 4, science is tentative. 73, read the following and choose the correct option. Assertion दिया गया है, साइंस टेक्स्ट बुक्स शुड इंक्लूड बायोग्राफीज ऑफ साइंटिस्ट, और इसका रीजनिंग क्या है, नैरेटिंग बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न हाउ साइंटिस्ट मेक डिस्कवरीज बाय फॉलोइंग अ यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड. सो ऑप्शन 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा नंबर 2, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट reasoning for A. 74,
Sample of four metal A, B, C, and D were added to the following solution separately. The result observed are shown below. What is the order of reactivities of this metal? यहाँ पे दिया गया है sample of four metal का जिसपे A, B, C, D were added to the following solution separately. So यहाँ पे है ऑप्शन 1 2 3 4. सो द करेक्ट आंसर होगा इसका नंबर 2, जो कि जो मेटल सी है दैट इज लेस देन मेटल ए. ओके, और जो मेटल ए है वो लेस देन है मेटल बी से, और जो बी है वो लेस देन है मेटल डी से. 75. Four test tube A, B, C, and D with different liquid are taken. Test tube A contains glucose solution. Test tube B contain turmeric solution. Or test tube C contain detergent solution, and test tube D contain pure water. Which of the following will you observe when you put? Number A, a piece of blue litmus paper in each test tube. नंबर बी में है अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब. नंबर सी, फ्यू ड्रॉप ऑफ फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन टू ईच सॉल्यूशन. सो इसका ऑप्शंस 1 2 3 4 दिया गया है. सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि 2 and 4 आर करेक्ट. ओके, आप पॉज करके देख सकते हो. 76. A ray of light travel from an optically denser medium to a optically rarer medium. What will be the change in the frequency of light? So first, increase and then decrease. Number 2, increase. Number 3, decrease. Number 4, no change. So the correct answer is number 4, that is no change. 77. Which of the following is a mismatch set? सो यहाँ पे दिया गया है सिलिकेट लाइम्स जिसका केमिकल फॉर्मूला CaO, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, गिप्सम CaSO4 2H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. और इसका यूजेस भी दिया गया है, जैसे कि सिलिकेट लाइम का यूज फॉर लोअरिंग द एसिडिटी ऑफ सोयल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज इन कोटिंग वॉल्स, और गिप्सम यूज इन डेंटिस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर यूज इन लॉन्ड्री. सो आप गेस कर सकते हो इसका करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 3, जो कि गिब्सन. ओके. 78. Consider the two statement S1 and S2 given below and choose the correct option. Statement 1. Non-zero work has to be done on a moving particle to change its momentum. S2. To change momentum of a particle, a non-zero net force should act on it. So ऑप्शन दिया गया है S1 and S2 are false. S1 is true but S2 is false. S1 is false but S2 is true. और नंबर 4 है both S1 and S2 are true. So इसका सही आंसर होगा आपका नंबर 3, S1 is false but S2 is true. 79. Which of the following statement is true regarding cyclone? Option 1, cool air rises and high pressure is created. Number 2, warm air rises and low pressure is created. Number 3, cool air sink and low pressure is created. Number 4, warm air sink and high pressure is created. So इसका सही आंसर होगा आपका नंबर 2, जो कि warm air rises and low pressure is created. 80. While discussing the nature of science in his class, a teacher makes the following remark: a scientist is open-minded. What does this remark highlight about scientists? So option, they do not agree with the view of other scientists. Number 2, they constantly come up with new ideas. Number 3, they also consider ideas which go against their own ideas. Number 4, they openly share their ideas with everyone. सो आप भी गेस कर सकते हो इसका आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज आपका नंबर 3, दे ऑल्सो कंसिडर आइडियाज विच गो अगेंस्ट देयर ओन आइडियाज. नेक्स्ट 81. Read the following and choose the correct option. Assertion: small intestine is the site of complete digestion of food. Reasoning: will have a large surface area.
which helps the small intestine in absorption of food. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग विल्ली बोलते हैं, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस होता है, और जिस पे विल्ली होता है, विल्ली क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प भी करता है, और वो सरफेस एरिया को क्या भी करता है, मैक्सिमाइज भी करता है. सो ये जो बोथ आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, सो इसका सही आंसर होगा नंबर 2. That is, both A and R are true, and R is the correct reasoning for A. Next, 82. Which method of reproduction is common to fungus, moss, and ferns? So, regeneration, number 2, budding, number 3, fragmentation, or number 4, spore formation. So, the correct answer is number 4, spore formation. Next question 83. Match the hormones given in column A with the deficiency disease given in column B. So hormone दिया गया है adrenal hormone, growth hormone, thyroxine and insulin. So आपका deficiency disease दिया गया है dwarfism, goiter, diabetes और salt imbalance. Okay. So इसका options 1, 2, 3, 4 दिया गया है. सो आप भी गेस कीजिए एड्रिनल हार्मोन से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4, जो कि आपका एड्रिनल हार्मोन का सॉल्ट इनबैलेंस होता है. ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज. ग्रोथ हार्मोन से होता है आपका डॉफिज्म, बी का 1. नंबर सी थायरोक्सिन से होता है आपका गोइटर, सी नंबर 2. और इंसुलिन से होता है आपका डायबिटीज, डी का 3. Next 84. Which of the following cannot be separated by crystallization? Solution of a methyl alcohol and potassium permanganate. Harvesting salt from impure sample. Number 3. Separation of alum from impure sample. Number 4. Mixture of zinc chloride and lead chloride. So इसका सही आंसर होगा नंबर 1, solution of methyl alcohol and potassium permanganate. 85. In a science class, Mr. Sumit brought some material. It was a water bottle, a glass, and thick paper sheet. He poured water in the glass and put the thick paper sheet on it. Slowly and carefully, he inverted the glass and removed his hand from there. Learners were surprised that paper had stuck on the glass and paper was not coming out. Some students said that paper had glue inside, while the others said it had stuck due to water inside the bottle. What accordingly to you was the objective of doing this task? So options हैं आपका help learner to understand that experiment are the principal route to scientific knowledge. Number B, encourage learner to construct explanation based on their observation. Number C, encourage learner to ask questions. So यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 and 4. So the right answer is आपका number 1, A, B and C. Okay. 86 question. Choose the correct statement from the given set of statement. Clay soil contains sand and silt. Percolation of water is faster in loamy soil than clay soil. Option C. Sandy soil has a greater proportion of big particles. Number D. Loamy soil contain humus. So आपका options 1, 2, 3, 4 दिया गया है, और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो B and C. 87. Which of the following tasks would be least suitable for developing an understanding of the relationship of science with society among learners? So number 1, poster competition on contribution of Indian scientists to the world. Number 2, debate on nuclear energy. Option 3, group project on latest development in science and technology. Option 4, concept map on sources of energy. Number 2, debate on nuclear energy. Option 3, group project on latest development in science and technology. Number 4, concept map on sources of energy. So इसका सही आंसर होगा आपका नंबर 4, concept map on sources of energy. 88. A teacher is doing an activity on density. A student observed that a steel spoon sinks in water, but a steel bowl floats. She asks a student, why do you think
The bowl did not sing. What will make it sing? Which of the following process skill is the teacher's trying to develop among her learner? Number one, inferring. Number two, hypothesizing. Number three, observing. Number फोर, experimenting. So इसका सही आंसर होगा आपका hypothesizing. Okay. 89. Read the following statement and choose the correct option. Process A, galvanization to prevent rusting. Process B है electroplating of copper. So ऑप्शन 1 2 3 4 दिया गया है. So इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 जो है both the processes A and B are chemical changes. Now the last question number 90. सो पूरा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ साइंस टीचर? विजिट टू प्लानिटेरियम, इंडस्ट्रीज एंड साइंस म्यूजियम. ऑप्शन 2, cultivation of hobbies in area related to science such as robotics and electronic. Option 3, regular meeting with teachers from neighboring school. Option 4, regular reading of science content given in science textbook. सो इसका सही आंसर होगा 4 जो है रेगुलर रीडिंग ऑफ साइंस कंटेंट गिवन इन साइंस टेक्स्ट बुक. ओके. सो हम लोग ने ये 2026 फरवरी का जो सीटेट पेपर 2 था साइंस का ये कंप्लीट सॉल्व किया है इसमें. ठीक है. आप लोग इसको अच्छे से देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है, इस बार के 2026 सितंबर सीटेट के लिए. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन. Thank you.